try having beer in a terracotta cup, like Anyway. Wow. Oh my God. I've learned so much today about what kind of a utensil I should buy. Why do we need a plastic का pipe? शिवलिंग के ऊपर drop irrigation नहीं होता है क्या? हाँ, see? Hi everyone, welcome to another episode of the Grounded podcast. So I'm Shelly. I'm your host. Hi everybody, I am Ankita, and together with Shelly and Nikhil and many more others, we are building naturehealers.life to help people live more sustainably, just one little step at a time. And why do I have this today? Because we have a very special guest with us, and we are going to know more about what this is and how this can be used. I have something too. Yay! Hi guys, I'm Nikhil, and as Ankita कहाँ से आ गया तू? मैं perfect catch. And we have Vandita with us today to tell us more about what just Ankita teased about right now. Hi, I am Vandita. So I'm the person who they've been talking about, and I'm Vandita Vijayvergiya. I am a potter and a ceramic designer by education, and I have a studio in Jaipur by the name of County. And today we are together going to tell you a little about how terracotta is so important in our lives and for our environment. And we'll try and motivate all of you to shift towards terracotta and bring it more and make it more of a part of your life. वंदिता ने मेरा job already कर दिया. Really? मैंने Zoom reaction भी दे दिया. So as you guys can see, Vandita is super passionate about clay art and ceramics, and her studio is in Jaipur called Clay County. And I would also like to highlight that Clay County makes beautiful functional pieces which are inspired by Mother Nature. And she's a champion of sustainable living, and her studio reflects just that. So go check out her website. And today we are going to talk about the beautiful role that terracotta has in our lives. So Vandita, why are you so passionate about clay art? And when did you start becoming a clay artist? So actually becoming a clay artist is quite later in my life once I joined my post-graduation college. But before that, I've always been a craft enthusiast. I always knew about the different crafts of India. I was always working on things on my own, making things out of paper, newspaper, quilling, making Barbie, like clothes for my Barbie dolls out of waste cloths, and I would just stitch and do it. So yeah, so I've been like that since childhood, and forever. When our teachers used to ask at the end of our year in class 12 that what do you want to do in life, and girls, I'm from an all girls education, so girls would answer doctor, engineer, journalist, and things like that. I came up and answered that I want to own a craft store, because at that point of time I did not know what I'm going to do in life. Interesting. But I was sure that I'm going to have something related to craft, which is going to be my own. And that's exactly where my life led to. So graduation happened, and then happened basically my play with crafts, and I entered Indian Institute of Crafts and Design in Jaipur. That's where I was introduced to clay in our first semester. We are introduced to all the materials. So that's leather, then there's paper, then there's bamboo, there's metal, wood, stone, and clay. So clay was the last material we worked with. And the moment I literally, started making something out of clay, I knew that this is what I'm going to do for life. I mean, it's something that just clicked. It's like sometimes it's just like first love. The first love clicks for love at first sight. It was like that.
So clay was like love at first feel, because clay is something that you work with your feelings with. You cannot be angry and work with clay. You're not going to make something fruitful out of it. It will just shatter into pieces, which is actually good. Your anger comes out like that. But yes, clay takes in all the feelings, whether you're putting in negativity or positivity. If you're putting in positivity, it increases it, because you finally end up making something beautiful, and then you really really feel happy about yourself, because making something out of nothing, which is just clay, मतलब केवल मिट्टी है और उससे कुछ बना लेना, it gives you a sense of achievement, and that in itself is very important for every human being कि कहीं तो कोई तो achievement आए. And other than that, clay in life has taught me a lot. One is patience. I mean, my sisters have always complained on how my patience level were literally nil. But when I started working with clay, I think now I am the one which has maximum patience out of all my sisters. So, so that's there. And it also teaches you how to take rejections and criticism, because क्ले के साथ ये है कि जब तक एक पीस फाइनली रेडी होके आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपको पता नहीं है कि वो कब प्रोसेस में टूट जाए, एंड देन इट्स इट, मतलब आपकी पूरी मेहनत टूट जाती है. बट देन एक वो डिटैचमेंट, एक वो फीलिंग कि ठीक है टूट गया, अपन वापस शुरू करेंगे और इस बार और मेहनत करेंगे, वो सारी चीजें क्ले actually teaches you how to live a sustainable life, not just by using things around you, but your inner sustainable life. How are you maintaining your inner soul? मतलब उसको कैसे sustain करना है, कोई reject कर दे तो फिर आपको कैसे behave करना है, कोई चीज टूट जाए तो कैसे behave करना है, patience कैसे रखना है. So clay has made me a much, I'm not saying I'm a very good human being, I might be wrong to people, but it has made me a much better person than what I was before I didn't have clay in my life. Yes. So आज वंदिता मेरा पूरा माइंड रीड कर रही है, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज गोइंग थ्रू योर हेड व्हेन यू आर मेकिंग अ पीस. हाँ, I'll say, yeah, एग्जैक्टली. the mindfulness behind clay. I mean, I never thought about it. I get the mindfulness in things that I am normally working with, but like this is so insightful. Yeah, So when you're actually sitting on a wheel and making something, is something going through your head? Are you thinking about things outside of what you're making, or is it all? So actually there are two ways to work with cooking. So I am not more of a wheel person, I'm more of a hand building person. I like working with hand. So when I start working, of course I have all that drama in my head, including my 18-month-old. So there's a lot to think about. But जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करते हैं ना, वो सारी चीजें वैनिश हो जाती है. यू हैव नथिंग इन योर हेड. इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट. ऑल योर थिंकिंग कि ये क्ले कैसे शेप लेने वाला है और कैसे उस फॉर्म में आने वाला है जिस फॉर्म में मैं चाहती हूँ, या फिर उस फॉर्म में जिस फॉर्म में क्ले एक्चुअली आना चाहता है. So sometimes I start working with the clay without any designs. I'm like, मैं बस clay से काम करूँगी. I'll see how it flows. I'll see what it becomes. Sometimes it's just a flat piece, जिसपे कुछ फूल या कुछ बना हुआ होता है. But sometimes it turns out something nice. So I mean, it's either ways. But my goal on working with clay is my satisfaction, is my sanity. Not anything other than that. Of course, I want to make people aware of how beautiful clay is, but I think I have a selfish motive here. For me, clay is the thing that I need in my life to maintain my sanity. If I'm not working with clay, I'm insane. I mean, that is something that my husband has also confirmed in my life. तुम प्लीज, he's like, तुमने क्ले से काम नहीं किया क्या बहुत दिनों से? जाओ यार, जाओ थोड़ा क्ले से काम करो, शांति पाओ लाइफ में, मुझे भी शांति से रहने दो. So that's the power that clay has over a song. So yeah. इस साल का मेरा गोल तो था पॉटरी सीखने का, but because of COVID, it couldn't happen. Terracotta and ceramics में क्या difference होता है? Because I never knew that they are different. So anything fired above 1000 degrees Celsius
is ceramic. मतलब ceramic में फिर stoneware, earthenware, porcelain, bone china, ये सारी चीजें भी ceramics में ही आती हैं. But anything fired below 1000 degrees Celsius is clay, which is terracotta. टेराकोटा की एक बहुत यूनिक बात होती है दैट इट इज नेचुरल क्ले. तो हर जगह से वो डिफरेंट होता है. तो इंटायर वर्ल्ड हैज क्ले हिस्ट्री. ओके, तो हर इंटायर वर्ल्ड में टेराकोटा अलग होता है. कहीं का टेराकोटा येलोइश होता है क्योंकि वहाँ पे निकल ज्यादा होता है. कहीं पे जैसे इंडिया का टेराकोटा इज मोर टुवर्ड्स रेडिश एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल विच इज कम्प्लीटली ब्लैकिश. तो रेडिश इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ब्लैकिश इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड. तो इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो उस हिसाब से टेम्परेचर भी वेरी होता रहता है. बट ऑन एन एवरेज 1000 डिग्री से ऊपर कोई भी टेराकोटा जाता नहीं है. मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स अ वेरी कांस्टेंट थिंग कि 1000 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम दैट यू पुट योर टेराकोटा वेयर इनटू इट. So that's there, and that is also a reason why terracotta में minerals अभी भी रह जाते हैं क्योंकि ceramic इतना high temperature पे जाता है कि उसमें से basically सब कुछ जल भुन के राख हो जाता है. All minerals, all impurities, everything is just burned off when it goes to a higher temperature in ceramics. Terracotta, whereas the good minerals sustain in terracotta because it is fired at a lower temperature. तो इसलिए जो उसमें अच्छी चीजें हैं वो रह जाती हैं. कुछ कुछ चल जाती हैं और कुछ रह जाती हैं. अच्छी चीजें. But Vandita, we don't really have to eat it, right? So it's okay if or is it not okay if the अच्छी चीजें are burnt off? So if you're using terracotta to cook or if you're using terracotta to store water, what happens is the mineral present in that clay is transferred into what you're cooking or storing. Initially terracotta actually आप देखा जाए तो clay को bake करना क्यों शुरू करा था? क्योंकि storage के लिए चाहिए था. That's what history says. अपन उसमें पहले grains और पानी रखते थे. That was the use of terracotta कि उससे बड़े बड़े pieces बना के उनको फायर में मतलब बेक करके और उसके अंदर ग्रेन्स और वाटर स्टोर करा जाता था. तो जब वाटर का तो अपने को क्लियरली पता है. आई मीन दिस इज अ टेस्ट दैट वी कैन डू, ऑल ऑफ अस कैन डू एट होम कि आप अगर क्ले को पहले पूरा जो उसको रेडी करके आप फिर उसमें पानी स्टोर करो मटके को, तो उसमें 24 घंटे बाद अगर आप उसका TDS लो और उसमें पानी डालने से पहले उसका TDS लो तो डिफरेंस आ जाता है. भले आपके नॉर्मल पानी का TDS ज्यादा हो तो वो मटका कम कर देता है और अगर पहले कम हो तो मटका बढ़ा देता है. Interesting. So it is a proven test that मटका does this to your water, and that's the same thing कि आजकल टेराकोटा में कुक करने को बोलते हैं because वही minerals though they don't have a lot of life, मतलब आप maximum एक pot को 3 महीने यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको नया लेना पड़ेगा. पर they're cheap, मतलब वो इशू भी नहीं है. It's not like आप बहुत expensive और बहुत महंगे कर रहे हो, and they're good for the environment also. तो उसमें आप खाना बनाते हो तो एडेड न्यूट्रिशंस हो जाते हैं. द सेम वे जब अपन आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, सेम थिंग इज विद टेराकोटा. बट प्लास्टिक के लिए लोग बोलते हैं कि हाँ बोलो अंकिता. So does that mean now I am going into the spiral of thought process of how do we make our water better for consumption without maybe the use of filters where it is not really necessary. So Yes. is it and I know nothing about what our earthen pots are able to absorb versus not absorb. So maybe you can also talk a little about like you said, of course osmosis type kuch hota hai jiski wajah se the balance becomes good of let's say impurities or heavy metals or minerals or whatever. And the place that I'm currently in, Pilani, यहाँ पे water में fluoride बहुत ज़्यादा है. या फिर there are some places जहाँ पे heavy metals बहुत ज़्यादा होता है water में. तो do you know something about that as well that you can talk about? So see what we have done for this test. मतलब हमको कॉलेज में ये चीज बोली थी, तो कॉलेज में हमने ये टेस्ट करा था and then I did it here also घर पे because हमारे घर में पानी का टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा था. So we were maintaining a TDS report. Okay, so what happened is
हमने जो पानी एक्चुअली यूज करा था वो फिल्टर का पानी था। तो आरओ लगा हुआ है, उसका पानी हमने मटके में डाला था। अब ऐसा भी हमने टेस्टिंग नहीं करी कि क्या मिनरल्स थे, क्या मेटल्स, व्हाट एंजाइम्स आर देयर इन द वाटर जिसको बैलेंस आउट करा टेराकोटा ने, बट टीडीएस तो उसने बैलेंस आउट कर दिया। एंड फिल्टर अगर आप देखें, आरओ हो या एक्वागार्ड हो, आई थिंक आज के जमाने में वो लगाना तो जरूरी है इंडिया में, बिकॉज पानी कहाँ से आ रहा है, यू नेवर नो। That's right. There are a lot of impurities. Terracotta is not a filter. It is like a ghada of minerals. So kabhi pani, because of existing minerals or chemicals in water which naturally exist in water, वो मटके से रिएक्ट करके अब्सॉर्ब कर लेता है या पूरी तरीके से मटका वापस अब्सॉर्ब कर लेता है. So it's either of the two. So what is happening technically, I don't have any clue. But this is what tested that पानी फिल्टर का पानी जरूर ठीक हो जाता है TDS पानी का टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है घड़े का try having beer in a terracotta cup, like anyway. Wow. वैसे government like speaking on ROs, government ने कह दिया that people need to find a new technology by 2025, I guess. And I think aquaguard was the best. वो simple aquaguard होते थे, एक फिल्टर वाला, वो सबसे अच्छा होता था. उसमें कुछ फालतू नहीं होती थी. But लोगों को नई चीजें इन्वेंट करके लोगों का माइंड डाइवर्ट करने में मजा तो आता है. It's also because जो normal aquaguards and normal filters जो भी हमारे आते हैं, they come at a price point of around 5,000 to 10,000, and ROs are usually much more expensive. So they're a much better money making machine for companies as well to sell. And one thing, I know we are like digressing from the topic, but I just recalled one thing. So my own place is in Gurgaon, and when we when we were deciding on whether we should go for a normal filter or an RO system to use our usable drinkable water, we got our TDS tested, and the person who tested it was from a company, of course, who was selling both filters and ROs. And he said that the water that you guys are getting is from the municipality, which means that it's already treated for the basic toxic materials. All you currently need to do is you need to make sure that there are no like mitti or impurities, those kind of things. So a normal filter is good for you. So we asked him, what are you incentivized on? Why are you not trying to sell us the RO system? And he's like, I'm not incentivized on selling you a more expensive product. I'm incentivized to sell you a unit of product. So, and that made all the difference in him giving us the right advice versus the more expensive advice. Interesting. Basically, terracotta breaks so easily that it's hard to imagine that it is sustainable. Can you explain more why it is better for the environment compared to plastics? So compared to plastic, I think terracotta is much better than anything. Glass, plastic, whatever it is. Plastic तो बहुत नीचे आ जाता है. There are two reasons. One is, of course, the benefits that it offers, and second is that अगर वो टूट भी जाता है, पहली चीज तो अगर आप उसको मटके जैसे यूज कर रहे हैं और अगर वो थोड़ा सा टूट जाए, then it's a very good home for a new plant, क्योंकि उसमें moisture and because of its porous category, उसमें porous characteristic, उसमें air flow बहुत अच्छा होता है. So मेरे पास example भी है अभी. Exactly. So जो plant, जो roots होते हैं plants की, वो बहुत अच्छे से breathe कर पाते हैं. So the more they breathe, the more they grow. ठीक है. उसके बाद भी अगर वो टूट जाता है, then you don't have to do anything. You just have to put it like उसको थोड़े छोटे में spread कर दो, and it's done. वो वापस in another 5 to 10 years, it would disintegrate into going back into being clay. वो थोड़े टाइम के लिए शायद मिट्टी को इनफर्टाइल बना दे, बट वंस द वर्म्स स्टार्ट देयर वर्क अगेन, मतलब जैसे जैसे जितने ज्यादा वर्म्स वापस काम करने लग जाएंगे उस मिट्टी पे, दे विल हैव देयर फर्टिलिटी बैक अगेन. सो दैट इज व्हाई टेराकोटा, इफ यू सी, इज अ very very good medium for earth. Coming back to humans, why it's good,
One, it's good to, again, nutrition point of view, and the other thing is प्लास्टिक में आप वैसे भी कुक नहीं करते, आप कुक स्टील में करते हैं. I wanted to compare metals as well, but I forgot. either steel, aluminium और नॉन स्टिक और फिर टेराकोटा आ जाता है. ठीक है. The only benefit that the other three has over terracotta is कि वो टूटते नहीं है and वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं. नॉन स्टिक एक्चुअली देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग कभी नहीं चलता है, बट लोग चलाते हैं. That's the mentality people have. They just don't throw things which टूट रहे ना. So non-stick anyways we know is very harmful क्योंकि उसकी जो layer होती है वो निकलती है. So that's out of the question. When we come next to aluminium is very harmful. Aluminium plates and utensils were started by British people for the prisoners. क्योंकि aluminium works as a slow poison. तो अगर आप रोज एल्यूमिनियम में पका हुआ खाना खा रहे हैं या फिर रोज एल्यूमिनियम की प्लेट में खाना खा रहे हैं, it is actually poison for you. You know, aluminium delays the growth. You know, a pregnant woman should never have anything cooked in aluminium. A child should never have anything cooked in aluminium. So it is very bad for the brain. Yeah. And then we come to steel. So steel, अगर आप देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है. Steel is okay because it's actually an alloy. It's a mix of other metals, and then it's made for cooking. So it is a second best option, but then it has no value addition to your food. Okay, terracotta wherein has value addition. अगर आप स्टील में भी कुकर और कढ़ाई का भी वेरिएंट करें, so cooking is not good. वो सारे जो क्विक कुकिंग होती है खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स उठ जाते हैं. There is no benefits of having slow, fast cooked food, which pressure cooker does. So pressure cookers are anyways out of the question, whether it be steel or aluminium. Then coming to steel kadhais or steel bhagonas for cooking and boiling milk. So all of that again, that what I'm saying is that steel mein aap kar rahe ho, theek hai. One is the price point, it's expensive. टेराकोटा की आप अगर एक कढ़ाई खरीदते हो तो ज्यादा से ज्यादा 300 to 500 रुपीज में आ जाती है. स्टील की आप अगर अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई ले रहे हो जो कि आपको लाइफ लॉन्ग चले, लो क्वालिटी भी आती है जो टूट जाती है. हाई क्वालिटी अगर आप लेते हो तो कुछ 2000-2500 के आसपास पड़ती है, which is a drastic difference if you see. And if you care for your terracotta properly, अगर आप उसे properly mature करो, उसे properly ढंग से use करो, ढंग से maintain करो, then it lasts a very long time. It's just that you need to be dedicated towards something like this. You can't be sustainable in a quick life. मतलब चुटकी बजा के कहते कि आज से मैं sustainable life जीऊंगा. It's a way of life. You need to develop into it, and that's what terracotta is. You need to adapt it into your life. कि ठीक है, let's make this a part of a life because it's offering something back to me and I'm not spoiling. स्टील का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रिसाइकलिंग. वेयर इज इट बीइंग रिसाइकल्ड, हाउ इज इट बीइंग रिसाइकल्ड, वेयर आर यू डंपिंग इट अल्टीमेटली, वहां से वो कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, व्हाट आर द हार्म्स दैट इट्स कॉजिंग टू द एनवायरनमेंट वंस इट्स बीइंग रिसाइकल्ड. तो वो सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. टेराकोटा में देयर आर नो क्वेश्चंस. इट कम्स फ्रॉम अर्थ, इट गोज बैक टू अर्थ. दैट्स द एंड ऑफ इट. सो आई थिंक इन जनरल ये जो notion है that terracotta is difficult to handle is because people have turned out to be lazy. इतना ज़्यादा they've got everything at disposable. अरे यार मतलब कौन मिट्टी के उसमें आप सिंक में नहीं पटक सकते क्योंकि टूट जाएगा. you आपको उसको अलग से रखना पड़ेगा, या आपकी बाई उसको धो नहीं सकती क्योंकि बाई तोड़ देगी, तो आपको खुद से उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तो लाइफ लोग अपनी इजी बनाने के लिए ये जो सारी चीजें उन पे शिफ्ट हो जाते हैं. बट अदरवाइज इफ यू सी terracotta has a lot to offer. People just need to accept it in their lives. Yeah, so like last year I was researching into सात्विक कुकिंग. हाँ, सात्विक कुकिंग में लो हीट पे खाना बनाते हैं विदाउट ऑयल और थोड़े से स्पाइसेस में. And terracotta plays a good role in it because low heat pe it's very good to cook in. But I ordered it in US and it came chipped basically because I guess it's not easy to transport, so it's not widely available as a cooking medium in
Western countries. Yes. And the cooking stoves that we have actually don't support it unless you have a gas stove. Um, Yes. and I'll also give one more counter argument to using terracotta in your kitchens from just like personal story. Like जैसे मेरे घर में मेरी mom ही सब कुछ खाना बनाती हैं, तो for her it's like she has to do so much of other housework that it's too much to cook in terracotta को maintain करना, and then her hands are they shake a lot, so she cannot like उसको चूल्हे पे उतार के फिर उसको रखना चूल्हे के ऊपर. But about steel versus aluminium, so there is a lot of research that has recently come in about how it causes Alzheimer's, how aluminium causes Alzheimer's. So recently we have switched our kadhais from aluminium to steel. I don't think I'm going anywhere with this. Insights. Just You're giving personally sharing. personal insights right now. And personal experience are the best ones to share. This is amazing. Like, I never knew this about aluminium utensils, and we are going to go buy a pan or a kadhai today for majorly for our as an egg pan, because hamara non-stick wala is now of course off date, and we don't want to go with another non-stick, of course, because of the Teflon layer, which is plastic, which eventually goes into our food. But now I'm rethinking whether I want to buy an aluminium one or maybe I want to try a terracotta one. I don't know how I'll make an egg on a terracotta one, but maybe I can try. Vandita will tell you how to make an egg on terracotta. Cast iron. That's your answer. Cast iron. Yes. The black iron. one, right? Yes, the black one. Yeah. Please cast iron. And उस पे आप कभी भी पानी और साबुन मत लगाना, बस तेल लगा के उसको एक आप उसको पोंछ देना. That's it. That's like we don't need. So we don't need to scrub it as well. Convenience pay. So you have already answered why people should use more terracotta in their lives. Like they can use it for drinking, for cooking, for storing their grains. For convenience, do you have any tips on how to make it easier? So terracotta cookware वो सीजन करना पड़ता है, हो या मटका हो. तो आप पहले उसे जब ला के आओ, भले आप मटका लेके आ रहे हो या कढ़ाई ला रहे हो, तवा ला रहे हो, आप कुछ भी लेके आ रहे हो, आपको उसको पहले अच्छे से पानी से वॉश करके, टेराकोटा पे कभी भी साबुन नहीं लगना चाहिए, नो काइंड ऑफ सोप, बिकॉज वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा. इट इज पोरस. तो उसमें उसकी सबसे मेन चीज यही होती है कि उसकी पोरोसिटी बहुत हाई होती है. तो एयर सर्कुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन रेट इज वेरी हाई इन टेराकोटा. तो उससे अपने को क्या करना होता है कि जब आप एक नई चीज लेके आओ, आप उसको पहले तो एक बार पानी से ढंग से रनिंग वाटर के अंदर उसको अच्छे से धो दो. फिर उसको 24 घंटे के लिए completely submerge it into water for 24 hours straight. It has to be under water. That's what it triggers the terracotta porosity, and it triggers the airflow and the mineral contents of the piece. After that, if it's a matka, you can just take it out and start filling water in it. If it's a tawa, it's also ready to use. आपको बस उसे sun dry करना होता है तवे को. अगर आप कुकवेयर लेके आए हैं, जैसे कढ़ाई हो या कोई हांडी जैसी चीज हो जिसमें अपन बिरयानी या वैसा कुछ बना सकते हैं, उसमें आपको उसको अच्छे से सन ड्राई बेसिकली अगर आपको 3 से 4 दिन सन ड्राई करना पड़े तो ठीक है, रोज उसको धूप में निकाल के करो, बट इट नीड्स टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ मॉइस्चर. वो करने के बाद उसमें आपको एक बहुत थिक लेयर ऑफ वेजिटेबल ऑयल लगाना होता है. एनी ऑयल, कोकोनट, सरसों का तेल, कोई सा तेल जो भी आपका फूड एडिबल फूड हो घर में, उसकी एक थिक लेयर ऑन द इनसाइड लगानी होती है ऑल ओवर. फिर उसको धीमी आंच पे उसको रख दीजिए टिल द टाइम उसमें फ्यूम्स आने ना लग जाए. After the fumes start coming out, that's when your kadhai or your handi is ready to cook in. वो तेल एक्चुअली जो होता है, जो आप इतनी थिक तेल की कोटिंग करते हो, वो पूरी टेराकोटा अब्सॉर्ब कर लेती है. अब्सॉर्प्शन के बाद वो एज अ नॉन स्टिक क्रिएट हो जाता है. तो फिर जब आप खाना उसमें बनाते हैं, वो चीजें वो कम सोखता है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है.
So that is how you season your terracotta ware. बट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग कि आपने उसमें सब्जी बना ली या तवे पे तो आप सिर्फ रोटी बनाते हो, तो यू कैन इजीली जस्ट डस्ट इट ऑफ विद अ ड्राई क्लॉथ. और अगर या फिर बहुत ही गंदा हो गया, आपको लगता है कि आपको उसे वॉश करने की जरूरत है, तो अगेन रनिंग वाटर के अंदर कर दो और फिर उसको सन ड्राई कर दो. बट व्हेन इट कम्स टू कुकवेयर, यू नीड टू वॉश इट विद लाइट वाटर, लाइक वार्म वाटर से उसको पूरा करके एक क्लीन स्क्रबर जो स्कॉच ब्राइट होता है विदाउट एनी सोप, उससे उसको वॉश कर दे, जिससे कि कोई भी फूड का कुछ खाने का कुछ रह गया हो तो वो क्लीन हो जाए, गर्म पानी और वो, एंड देन सन ड्राई इट. दैट्स इट. देयर इज नथिंग एल्स नीड टू बी डन विद अ टेराकोटा कुकवेयर. अगर उसमें बहुत सारी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है इन द एनवायरनमेंट लाइक कैलकाटा एंड बॉम्बे, तो वहां पे आप उसको माइक्रोवेव कर सकते हो, लाइक फॉर 2 मिनट्स आप उसको माइक्रोवेव कर दो, जो भी जर्म बिल्डअप होता है ना वो नहीं होता, तो उससे आप फंगस अवॉइड कर सकते हो. So you have to sun dry it after each and every use, right? नॉट ईच एंड आफ्टर, मतलब आप 15 दिन में एक बार कर दो, महीने में 2 बार. या फिर सनराइज टू मच ऑफ वर्क, तो कन्वीनियंस के लिए माइक्रोवेव में रख दो आप 2 मिनट के लिए. डज द सेम जॉब. Shelly, from what you said, I remembered one more thing that my mom once told me. So these washing our dishes with soap is actually a very new thing, you know. And when my mom was probably in her teens, what they used to do was they used to wash their utensils either with raak or with mitti. Yes. And that is also washing. And they never used any soap at that time, because at that time soap was considered not good to be used on utensils, because if you use it on utensils, then it might go into your food. And looking at it now, we have actually taken an entire 180-degree turn on that. The soap Exactly. pollutes your water systems. Yeah. Yeah, that's true also. Yes. So, oh my God. I've learned so much today about what kind of a utensil I should buy. जाके खरीद आज. बस आज 2 बजे अपॉइंटमेंट है जाने का. So you Clay County is zero waste, right? Or you're trying to be? I'm trying to be, because clay में plastic का use is very important right now. We can't let clay dry up. तो हमारी जो buckets of storage and जो wrapping material होता है clay को रखने के लिए, while it's in the process, it's all plastic. So yes. What did traditionally potters use? Eucalyptus leaves. So is that not an option anymore? It is, but I need to have eucalyptus trees around me. What about wet cloth? It will dry up. No, I will have to. But you can set up drip irrigation on the cloth. Okay. Drip irrigation. Too much work. But then it will take more water. है ना, ड्रिप इरिगेशन के प्लास्टिक का पाइप ले आओ एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर. नहीं, why do we need a plastic का पाइप? शिवलिंग के ऊपर ड्रॉप इरिगेशन नहीं होता है क्या? हाँ. के अंदर See,